The positive direction in Constitution of India are as a charter of social and economic democracy in the country. The Constitution of India is not merely a political document, it serves as a charter for social and economic democracy by embedding progressive principles aimed at achieving justice, equality, dignity for all citizens. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट सर्व एज ए चार्टर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बाय एम्बेडिंग प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स aim at achieving justice, equality and dignity for all citizens. Dr. B.R. Ambedkar envisaged the constitution as a tool to bridge social inequalities and promote economic justice. एक ब्रिज है टू कॉन्स्टिट्यूशन as a tool to bridge social inequalities and promote economic justice, ensuring that political democracy is supplemented by social and economic empowerment. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है जो हमें फंडामेंटल राइट से मिल रही है इज सप्लीमेंटेड बाई सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. अब हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंसरेंड इन आर्टिकल 4 in part 4 of constitution article 36 to 51. The DPSP aim to establish a welfare state and promote social and economic justice. Key provisions. Article 38 securing a social order based on justice. ठीक है. Article 39 ensuring adequate mean of livelihood and equitable distribution of resources. Article 41 right to work, education and public assistance. Article 43 living wage and decent working condition. Article 46 promotion of educational and economic interest of weaker section. अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड सोशल जस्टिस. देखो राइट टू इक्वालिटी अंदर ये क्यों लिखा पॉजिटिव डायरेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया. अच्छा अभी हम एग्जैक्ट DPSP की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है तो एक तो DPSP वाला आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड सोशल जस्टिस. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 अबॉलिशेस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 empower citizen to approach the Supreme Court for enforcement of right. Social and economic justice is the signature tone of our constitution. Justice P.N. भगवती. अब आते हैं एक तो पहले DPSP हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गया. अब देते हैं रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 provide the reservation of seat in educational institution and public employment for scheduled caste, scheduled tribe and other backward caste. Article 330 to 342 ensures representation and empowerment of marginal community. आर्टिकल 330 से 342 आर्टिकल 330 से 342 इंश्योर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेशन. लैंड रिफॉर्म अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. ठीक है. लेबर लॉ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर राइट्स एंड फेयर वेजेस. एजुकेशन एंड हेल्थ right to free and compulsory education under article 21A. Judicial interpretation and strengthening social justice. Keshavanand Bharati case of 1973. Supreme Court held that social and economic justice are the part of basic structure of constitution. In Indra Sahni judgment case of 1992 upheld reservation for OBC as a tool for achieving social justice. तो हमने देखा केशवानंद भारती केस 1973 in the Supreme Court held that social and economic justice are the part of basic structure और इंदिरा सैनी ने अपहोल्ड रिजर्वेशन फॉर OBC एज अ टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस. कंक्लूजन अगर हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंक्शन एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव चार्टर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एमिंग टू क्रिएट अ इगलिटेरियन सोसाइटी. Transformative charter for socio and economic democracy aiming to create egalitarian society. As Dr. Bhimrao Ambedkar stated, political democracy cannot last unless there lies a base of its social democracy. अगर
सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। द पॉजिटिव डायरेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व इंश्योर दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी is enriched by social and economic empowerment, fostering a just and equitable society. Okay. By the Constitution of India is quasi-federal. K.C. Vere called it quasi-federal, emphasizing its strong central authority with a federal feature. The Constitution of India is described as quasi-federal because it combines federal and unitary features, but with a strong centralizing tendency. It does not strictly follow the classic federal system like USA or unitary federal model like UK. Instead of, it establishes a federal structure with unitary bias, where union government hold more power than state. जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट हैव अनइक्वल पावर, ठीक है, इंडिया बेल्जियम, ठीक है। की फीचर्स मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल, सबसे पहला है फेडरल फीचर। डिस्पाइट इट्स यूनियन टेंडेंसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड सेवरल फेडरल करेक्टरिस्टिक्स। पहला है डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इंडिया हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहला यूनियन और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, विच सेपरेट्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर्स 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 59 और कंकरेंट लिस्ट में 52, ठीक है। यूनियन लिस्ट कंट्रोल बाय सेंटर, डेट इज डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। स्टेट लिस्ट 59 सब्जेक्ट कंट्रोल बाय स्टेट, जैसे पुलिस और पब्लिक हेल्थ। कंकरेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट, बोथ कैन लेजिस्लेट बट यूनियन लॉ प्रिवेल इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। आर्टिकल 254। Written and rigid constitution, Indian constitution is a written document that provides a structured distribution of power and require a special provision for amendment. Article 368। Independent judiciary, the Supreme Court and High Court ensure the division of power is maintained, resolving dispute between the center and state. Independent judiciary, the Supreme Court and High Court ensures the division of power is maintained, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। फेडरल डुअल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, एंड रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यूनिटरी फंक्शंस अगर हम देखते हैं, यूनिटरी फंक्शन डोमिनेटिंग फेडरलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर ग्राउंड मोर पावर टू सेंटर मेकिंग इट क्वासी फेडरल। स्ट्रॉन्ग सेंटर इन लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट कैन रजिस्ट्रेट ऑन स्टेट मैटर। आर्टिकल 249, 250, 252। If Rajya Sabha pass a resolution with a 2/3 majority, Parliament can legislate on state list. Article 249। Emergency provision, emergency Article 250। Center can make law on state subject. Governor's role, Article 200। The governor appointed by president can resolve state bill for president assents. Increasing central control, financial control of center, limited state revenue power, the central control major tax resources जैसे income tax, corporate tax, custom duties, while state depends on grants and tax devolution from center। पर फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, लिमिटेड रेवेन्यू पावर इनके पास। जीएसटी सिस्टम, जीएसटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय सेंटर, डिसाइड्स टैक्स रेट लिमिटिंग स्टेट ऑटोनॉमी, फिजिकल ऑटोनॉमी। इमरजेंसी प्रोविजन स्ट्रेंथनिंग यूनिटरी फीचर, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। द सेंटर कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट्स ओवरराइडिंग स्टेट्स पावर। स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। गवर्नर कैन रिकमेंड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लीडिंग टू प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। द सेंटर कैन कट स्टेट बजट एंड कंट्रोल देयर फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड जुडिशरी अंडर सेंट्रल कंट्रोल, देखो IAS, IPS, IFS थ्रो सर्विंग इन स्टेट, दीज ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड एंड कंट्रोल्ड बाई center, ensuring national level administration influence। Unified judiciary, unlike USA where state and federal court are separate, India has
single integrated judicial system, reducing state autonomy. Keswanan Bharti case of 1973, the Supreme Court held that federalism is part of basic structure of the constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar rightly described it India as federal in the form but unitary in spirit. What is e-governance? Discuss the implementation of e-governance in Bihar. E-governance refers to application of ICT, information and communication technology in government operation. It is essentially a step towards smart governance, which means simple, ethical, accountable, responsible, and transparent governance. Example include National E-Governance Plan and E-Revolution. देखो, pillar of e-governance: people, process, technology, and resources. Type of e-governance: government to government, government to citizen, government to business, government to employee, government to government. अब हम आते हैं, these interaction represent different aspect of digital communication services, जैसे government to citizen, enable citizen to benefit from a wide range of public services efficiently, expand the reach and availability of government services while improving service quality. ठीक है. Primary goal is to make government citizen friendly. Government to business interaction: this tool help the business community communicate effectively with government, reduce bureaucratic red tape, saving time and operational cost by promoting a more transparent business environment. Government to business initiative assists in licensing, procurement, permits and revenue collections. Government to government initiative enable streamlined communication between different government institutions. This interaction occurs within different government department agencies or between different level of government such as central and state government. The primary objective is to improve efficiency, performance and outcomes. Government to employee interaction: it involves communication between the government and its employee. ICT tools help make interaction faster and more efficient, thereby increasing employee satisfaction level. Benefit of e-governance: improved delivery and efficiency of government services, better interaction between government and business, citizen empowerment through better access to information, more efficient government management, reduction in corruption, increased transparency in administration, more convenience for citizen and business, reduction in cost and increase in government revenue, enhancement of government legitimacy, flattening of organizational structure, fewer hierarchical level, reduction in paperwork and bureaucratic delay, leading to better planning and coordination across different levels of government. Improved relationship between public institution and civil society, restructuring of administrative process. Status of e-governance in Bihar. पहला है इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर. बिहार गवर्नमेंट introduce this innovative initiative to provide information to general public under Right to Information Act. Due to this initiative, Bihar received National E-Governance Award in 2008-9 National E-Governance Award. E-District Scheme project to facilitate public services through software at a single location. Okay. Where Right to Public Service Act provide various services to citizens through a single window system. BAT management information system offer online services for business such as road permits and e-payments. Road permits, e-payments. Bihar Right to Public Service Act. ठीक है. Bihar State Wide Area Network connect all the 38 districts and 495 blocks across the state. Provide voice, videos and data exchange connectivity in all government offices at DHMU and BHMU levels. Okay. Bihar Public Grievances Redressal System facilitate smooth functioning of जनता के दरबार में मुख्यमंत्री Chief Minister's Grievance Redressal Program. Ensure timely execution of tasks related to various department and district administration. Based on WAVE framework, it is computerized public grievance resolution system. E-Shakti project promote transparency in Manrega scheme. Use a biometric based verification system. E-procurement help
कॉन्ट्रैक्टर इजीली ऑप्टेन ट्रेडर्स ऑनलाइन, सारथी और वाहन सॉफ्टवेयर सिंप्लीफाइज व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स पेमेंट, हाउसिंग सॉफ्टवेयर इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ई पंचायत और ई ग्राम. Several panchayats and villages in Bihar have incorporated information technology to take e-governance to grassroots level. Conclusion क्या है? Effective governance benefit every citizen of the country. Citizens are willing to bear the cost of services provided by state, but transparency and accountability must be ensured. It is essential to continue working towards the principle of सबका साथ सबका विकास, development interest of all, which ensure inclusive sustainable development.